लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज जो है डायरेक्टली मशीन को समझ में नहीं आएगी। इफ आई डायरेक्टली टेल गिव पाइथन इंस्ट्रक्शन टू मशीन, उसको वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि हम जो पाइथन में इंस्ट्रक्शन दे वो मशीन को समझ में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्टर बनाएंगे, एक इंटरप्रेटर बनाएंगे। ये क्या क्रिएट करेंगे, एक इंटरप्रेटर क्रिएट करेंगे। द रोल ऑफ इंटरप्रेटर इज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वी विल गिव दिस इंस्ट्रक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। देयर इज अ सॉफ्टवेयर सिटिंग इन बिटवीन अस एंड मशीन। वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, या उसका नाम हम बोलते हैं वो एक इंटरप्रेटर है। वो एक इंटरप्रेटर क्या करेगा, जो हमारा पाइथन लेवल पाइथन का लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन है उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो एक सीक्वेंस समझ लेते हैं इसका। एक जस्ट अ मोमेंट। ओके, आई गेस स्क्रीन विजिबल है सबको। ओके, फाइन। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, ये सपोज हमारा मशीन है, लेट्स सपोज दिस इज आवर मशीन। ओके, प्रॉब्लम विथ मशीन इज मशीन विल ओनली अंडरस्टैंड लैंग्वेजेस ऑफ जीरोस एंड वंस। मशीन को क्या समझ में आएगा, अगर मैं उसको 00 11 10 ऐसे कुछ बताऊंगा तो वो सारी चीजें उसे समझ में आ जाएंगे। बट एज अ ह्यूमन आवर प्रॉब्लम इज हम लोगों को बाइनरी लैंग्वेज इतने अच्छे से नहीं आती। ओके, so we are not capable of interpreting or understanding or creating code with binary language. Okay, तो जैसे अब हम हो गए, suppose the circle represents us. So what we want is we want a language which is similar to the language in which we speak. Okay, तो हमने क्या प्रिफर किया, we created programming language which is similar to English language. Okay, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश की तरह होना चाहिए। और वो जो लैंग्वेज बना वो कौन सा लैंग्वेज है, वो है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, ओके, हाई लेवल लैंग्वेज किसके जैसा होगा, हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश के तरह होगा, सिमिलर टू इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। ओके, तो सिमिलर टू, ओके, सिमिलर टू इंग्लिश। ओके, नाउ द चैलेंज इज एज अ ह्यूमन वी वांट टू गिव इंस्ट्रक्शन टू अ मशीन, एंड हमें चाहिए कि मशीन हमारे इंस्ट्रक्शन को समझ सके जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके दे रहे हैं। ओके, तो अब इसके लिए क्या होगा कि हमें इन ये कन्वर्जन करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। ओके, और ये कन्वर्जन कौन करेगा, ये कन्वर्जन करने के लिए हमने अलग से एक कंपोनेंट बनाया है, एक सिस्टम प्रोग्राम बनाया है जिसका काम क्या होगा, जैसे डायमंड रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा इंटरप्रेटर। ओके, ये इंटरप्रेटर क्या करेगा, कन्वर्जन का काम करेगा। ओके, तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वी विल गिव इंस्ट्रक्शन टू मशीन इन हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे कि हम अभी कौन सा लैंग्वेज सीखने वाले हैं, हम लैंग्वेज सीखने वाले हैं पाइथन। इन दिस क्लास वी विल लर्न अ लैंग्वेज कॉल्ड पाइथन। ओके, तो पाइथन जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज होगा, उसके लिए हमें एक इंटरप्रेटर चाहिए। या इंटरप्रेटर का क्या काम होगा, द रोल ऑफ इंटरप्रेटर इज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। ओके, इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल। तो अब सबसे पहला टास्क क्या होगा हमारा, हमको ये इंटरप्रेटर चाहिए। फर्स्ट टास्क क्या होगा हमारा, वी नीड दिस इंटरप्रेटर विच विल कन्वर्ट आर पाइथन कोड इनटू मशीन कोड। फाइन, अब देखते हैं अब ये इंटरप्रेटर हमको मिलेगा कहाँ पे। कहाँ पे मिलेगा इंटरप्रेटर, ये इंटरप्रेटर हमको मिल जाएगा इंटरनेट पे, हम लोग डायरेक्टली उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई विल शेयर माई स्क्रीन विथ यू।
तो पाइथन इंटरप्रेटर कैसे मिलेगा? यू कैन गो टू इंटरनेट, सर्च फॉर पाइथन डाउनलोड। ओके, जब मैं डाउनलोड पाइथन पे जाऊंगा तो यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। दिस पेज इज बाय python.org। डाउनलोड सेक्शन में यहाँ पे लेटेस्ट जो वर्जन अवेलेबल है पाइथन का 3.10.2, ये वर्जन हमें क्या करना है? डाउनलोड कर लेना है। ओके, वंस दिस वर्जन इज डाउनलोडेड, डबल क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं? इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल करेंगे। आई ऑलरेडी हैव दिस थिंग इन माय कंप्यूटर। लेटेस्ट हम लोग कंटिन्यू करके क्या कहते हैं? इसे डाउनलोड कर लेते हैं। इंस्टॉल कर दिया और डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो तुम विंडोज़ यूज़ कर रहे होगे, लिनक्स यूज़ कर रहे होगे, मैक यूज़ कर रहे होगे, अप्रोप्रिएटली यहाँ से डाउनलोड्स में तुमको स्पेसिफिक सेक्शन पे रिडायरेक्ट कर देगा, एंड देन फ्रॉम देयर यू डाउनलोड एंड इंस्टॉल। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू। ओके, so if this thing is okay, you understand, then say yes or no. Okay, so I guess till this point everything is okay for you. यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। ओके, श्रुति बंद कर दो जरा सा, डोर लॉक कर बंद करके जाओ बाहर। नाउ नेक्स्ट, जब ये डाउनलोड हो जाएगा अब क्या करना है? तो यू कैन गो टू योर सर्च बार एंड यहाँ पे सर्च करो IDLE के लिए। okay? तो सर्च फॉर IDLE, जहाँ पे तुम्हारे सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड है, स्टार्ट बटन होगा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करके सर्च फॉर IDLE एंड ओपन दिस ऐप IDLE करके आएगा। ठीक है, इसे मैं डबल क्लिक करके स्टार्ट कर सकता हूँ, तो ऐसे एक वाइट कलर का विंडो आएगा। ठीक है, तो अगर विंडोज यूज़ कर रहे होगे, जहाँ पे स्टार्ट मेनू होता है, स्टार्ट पे क्लिक करके सर्च फॉर IDLE, वो आइकन तुमको दिख जाएगा, डबल क्लिक करना है आफ्टर इंस्टॉलेशन एंड दिस टर्मिनल विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, ये अपना पाइथन का प्रॉम्प्ट आ गया। नाउ इफ आई गिव पाइथन इंस्ट्रक्शन यूजिंग दिस software, then what will happen using this shell? This will convert my Python instruction into appropriate machine code. Okay, तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ hello, so what it is telling? This is telling hello is not defined. It means Python जो एक language है, उसको पहले हमें language सीखना पड़ेगा. Once we learn this language, then only we can interact with a system. Okay, और क्या ट्राई कर सकते हैं? लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ 5, एंटर। तो पाइथन अंडरस्टैंड डिजिट। इफ आई टेल 5, पाइथन को पता चल रहा है अच्छा एक नंबर 5 है। वैसे अगर मैं कोई नाम देता हूँ तो क्या कर रहा है? वो नाम दिया तो एरर दे रहा है। ओके, व्हाट इन द एरर इट इज टेलिंग? इफ यू वांट टू गिव नेम देन यूज सिंगल और डबल कोट्स। ओके, तो मुझे क्या करना है? अगर कोई नेम देना है तो मैं या तो उसे सिंगल कोट्स में दे सकता हूँ, ओके, या तो डबल कोट्स में दे सकता हूँ। ओके, both the things is accepted. So we can give two types of values. नंबर वैल्यू दे सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हैं। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इनपुट दे सकते हैं क्या सिस्टम को? यस, चलेगा, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी इनपुट दे सकते हैं। और क्या समझ में आता है पाइथन को? ट्रू फॉल्स समझ में आता है क्या? अगर मैं बोलता हूँ ट्रू, बोल रहा ट्रू ऐसे नहीं लिखना है, ट्रू के लिए क्या करना है? टी कैपिटल करना है। तो क्या करना है? टी कैपिटल देन RUE। तो ट्रू का मीनिंग दिस पाइथन अंडरस्टैंड। ओके, फॉल्स समझता है इसको? यस। So from here we can interpret that Python understands number, Python understands string, and it also understands true and false. Okay, now let's explore and see what else can be done. तो अगर मैं पाइथन को कहता हूँ कि 4+5 करने आता है क्या तुमको? तो पाइथन इज टेलिंग यस,
4 plus 5 is 9. Okay, subtraction करने आता है पाइथन को. 4 plus 4 minus 5 बोला, it is telling -1. Yes, Python can subtract number. Okay, let's see multiplication होता है क्या. Okay, so multiplication is also allowed. Let's see about division operation. So 45 divided by 3. Okay, the output is coming. मैं करता हूँ 45 या 43 divided by 4. Okay, answer is coming. Now let's suppose I want to do only integer division. Okay, यानी integer division होना चाहिए और remainder generate होना चाहिए. So for that we have this operator double slash. तो अगर मैं डबल स्लैश यूज करूंगा तो क्या करेगा, सिर्फ ये इंटीजर डिवीजन परफॉर्म करेगा. ओके, नाउ वंस वी डू इंटीजर डिवीजन के बाद में उसका रिमाइंडर भी जनरेट होता है. तो इफ आई वांट टू चेक व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ 43 आफ्टर डिवाइडिंग बाय 4, तो कैसे चेक होगा. 43 का अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए आफ्टर डिवाइडिंग बाय 4, देन द ऑपरेटर इज मॉड ऑपरेटर represented by a symbol called percentage. So if I write 4, the output will be 3. So 3 is the remainder generated if I divide 43 with 4. Okay, so simple arithmetic we can perform with Python: addition, subtraction, multiplication, division, integer division, and we can also check the remainder value. Now, can you tell me which operator is this? ये डबल स्टार से कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? Anyone? स्क्वायर स्क्वायर हो रहा है. 3 डबल स्टार 2 दिया तो 3 स्क्वायर हो रहा है. वैसे ही 3 क्यूब निकल रहा है, 3⁻4 हो रहा है. सो इफ आई वांट टू राइट x⁻y, तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज डबल स्टार फॉर दैट. सो दिस इज लाइक x⁻y फॉर यू. ओके, so these are the operators available. Okay, now what else? इससे ये तो पता चल गया कि चलो अरिथमेटिक हो रहा है. टेक्स्ट के साथ क्या कर सकते हैं. लेट्स सपोज मेरे पास 2 टेक्स्ट हैं. एक है मेरा फर्स्ट नेम है. ओके, नाउ आई वांट टू ऐड माय लास्ट नेम आल्सो विद इट. So if I hit enter, so plus operator can also do the job of combining two things. So if I want to join two strings, if I want to concatenate two strings, then I can use plus operator. Okay, now अगर मुझे यहाँ पे स्पेस देना है दो जन के बीच में, तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं सिंगल कोड एंड देन आई विल कॉन्कैटिनेट विथ स्पेस एंड देन फिर कॉन्कैटिनेट कर सकता हूँ किसके साथ में, सेकेंड नेम के साथ, लास्ट नेम के साथ. ओके, सिंगल कोड डबल कोड दोनों अलाउड है. What will happen if I write 45 plus some string? क्या होगा इसमें? So Python is telling this is not allowed. You cannot add a number with string. Okay, so string can be concatenated with strings only. So if I write 40, I write anything, name and then plus, then in single quotes if I write 83, then what will happen? These two details are got added together. So here 83 is number, but if I write in single or double quotes, Python will consider it as
string value. ओके, तो यहाँ पे जो अभी 83 है, अगर मैं पाइथन को पूछूंगा कि व्हाट इज दिस इज अ नंबर और स्ट्रिंग, तो पाइथन क्या बोलेगा, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है. तो हाउ पाइथन इज डिफरेंशिएटिंग बिटवीन नंबर्स एंड स्ट्रिंग, वो चेक करता है. इफ समथिंग इज इन सिंगल और डबल कोड, पाइथन विल थिंक दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यू, and if numbers are directly written, then this is a number value. Okay, I guess things are clear till this point. Yes, sir. Yes. Okay, now how many of you understand variables? What is a variable? किसी ने पढ़ा है वेरिएबल्स के बारे में कभी? Yes, no. सी प्रोग्रामिंग, जावा सबने किया ना अभी तक, बाकी है करने का. Okay, so for your silence is considered as no from my side. Okay, so silence means no. Okay, so now what is variable? Okay, so we can think of variable as containers. Okay, boxes, empty boxes. Variables are like empty boxes which can be used to store something. Okay, containers are like this boxes, or variables are like this boxes which are meant to store something, which are meant to store something in it. Okay, so now how to use variable? I can use variable. first उसे क्रिएट करना पड़ेगा. ओके, क्रिएट करने के लिए पाइथन में क्या देना पड़ता है, इस वेरिएबल को एक नाम असाइन करना पड़ता है. क्या देना पड़ेगा, वी हैव टू गिव अ नेम टू इट. So like I will give this variable a name as number. Okay, or num or anything. Next, I can create a number value also. पाइथन में हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर वैल्यू भी क्रिएट कर सकते हैं. लेट्स सपोज पाइथन की मेमोरी में हमने एक नंबर क्रिएट किया जिसका वैल्यू होगा 23 और समथिंग. नहीं हो रहा, ठीक है. यहाँ पे हम कुछ नंबर स्टोर कर देते हैं 23. So there are two things. One is this container with the name number, जिसका काम क्या है, किसी भी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर लो. ठीक है. Second thing, there is a number called 23. Now what I want is, I want this number 23 to be stored inside the container of number, inside the variable of number. Okay, समझ रहे हो क्या करना है, ये जो 23 है वो जाके सीधा इस बॉक्स के अंदर जाके स्टोर हो जाना चाहिए. ओके, so this operation is called assignment operation. कौन सा ऑपरेशन है ये, assignment operation है. Okay, and for every operations we have operators, and the operator which is used for assignment is called equal to. So equal to is which operator, equal to is assignment operator, equal to is assignment operator. Okay, तो पाइथन में कैसे चलेगा, अगर मुझे ये 23 को एक वेरिएबल में स्टोर करना है तो मैं लिखूंगा नंबर देन इक्वल टू देन 23, और जैसे मैं एंटर हिट करूंगा क्या हो जाएगा, ये 23 जो नंबर था वो एक वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा. Okay, so let's see how to work with variables. Yes, I can go to my idle screen. This is a compiler or the interpreter I have. I can use it.
create a new one. I can go and search for ideally. I can start. Okay. Now, what I said, I want to create a variable with the name number, and I want to store a value 34 to it. If I hit enter, it is not showing me anything. But if I check what is the value of number, it is telling me 34. Okay. Similarly, I can create a variable to store name also or strings also. Okay. And if I write name, then this will display name value. Okay. Now, apart from this, Python is also having some inbuilt functions. Okay. And we can use this inbuilt function to do some activity. Like the most common activity which we are going to perform is called displaying something on this shell screen. Okay, so if I want to display something on the screen, I can call print function. So print is a function whose role is to display something on this screen. Okay, so if I hit print, enter, nothing is displayed because I'm not telling anything to display to this print function. Okay, now if I call again and I'll tell print function to print a number 34, it will display 34. Okay, similarly, I can call print to display name, to display my name or anything XYZ, it will display the XYZ value. I can call this print function to display the variable's value, like num value I want to display. I'll say 34 is the value of num. Similarly, I can call print function to display name. The value is just stored inside the variable name. If I hit enter, I'll get the name value. Okay. I can format this print function also. I can say to print that my name is, and then I want to display the value of name. Okay, this is how output is coming. I can further format it and say that print my name is, and then the variable name. Okay, after that I want to display my age, so I'll write \n my lucky number is, in double quotes I'll write the value of number. Okay, let's see if this works. This is also working. Okay. So is this part clear, how to use print function? Any queries, questions about print? Because in your program you are going to use this function most frequently. \n use क्या है? \n use is escape sequence whose role is to display things in new line. Okay, so \n means new line. All right, so just take a moment and tell me. Okay, good. Now what else? Okay, so print function is okay. Variables are how to process strings and how to deal with numbers are okay. One more thing we can try, if what will happen if I want to print 34 plus some number. What will happen here? Any guesses? Any guesses? What will happen if I hit enter? The output will be the addition of two numbers. Okay, and what will happen if I write print in single quote 34 and then plus in single quote 54? This will
join the two things. So 34 plus 54, if both are strings, then the output will be 3454. Okay. Now, today we see one more function, and that function is used to give input to the program. So how to give input to this program? So today we'll try to understand input and output functions. So tell me the name of output function. Which output function you learn? Output function means what? The function which is displaying something on screen. So which output function we learn? We learned print function. So print is output function over here. Okay. Responsibility of print function is to display something on screen. Something means what? You have to supply that something within the bracket of print function, within the argument of print function. Okay. Now the other function which we are going to learn is called input function. The function name is input. क्या नाम है उसका? Input function. So if I call directly input function, okay, and if I hit enter, it is waiting. It is waiting. Why it is waiting? It wants me to give something to it. It wants me to type something over here. So if I type 45 and if I hit enter, so number 45 is accepted by the program. Now what I can do with this? I can assign this value to a variable. Let's call this variable number again. And I will use input function. Okay. And if I hit enter, the program is waiting for me to give some number. If I say 45, this 45 is accepted and stored inside variable num. How to check it? Use print function. Use print function to check what is there in the variable num. And if I hit enter, the value is 45. Okay. Now to make things more meaningful, what I can do is when I call input function, I can guide user. I can guide the software user that you enter. Give me a moment. Okay. So what I can tell this function to do, I will say enter a number value. Enter a number. And now if I hit enter, what is happening? This time things are more readable or appropriate for a software user, that my software is telling me to enter a number. And if I hit number 34, what will happen? This number 34 is accepted. And if I print the value of number, the output will be 34. Okay. Similarly, I can ask for name and accept the value of name also. Okay. There is one function in Python called type. Okay. Type will tell me which type of value variable is storing. So if I ask Python, what is the type of 3? What is the type of 3? Okay. What is the type of 3? So it is telling 3 is type of integer value. 3 is type of integer value. Similarly, I can ask what is the type of ABC? What is the type of ABC? So this will tell me this is the type of string. Okay. I can ask for type of 45 in single quote. So Python will tell me this is also a string. Okay. I can ask what is the type of 45.65. So Python is telling this is float value. Likewise, we have other types of variables also. So right now you just understand there are integers, strings, and floats. Okay.
Now, can you tell me what will be the output of this statement? क्या आएगा इसका output? इसका output क्या आएगा when I hit enter? Anyone? Integer. Integer? Sure. कैसे पता चला integer आएगा? Because we have asked, we assigned this value over here, okay, and we supplied number 34, okay. But if you check, you will find out that the output is string. The output is string. Now, why it is happening? It is happening because if I use input function to assign any value to a variable, if I use input function to assign any value to a variable, then by default it will supply a string value. By default it will supply a string value. Got it? By default it will supply string value. Now, what if I want integer value? So I need to do a conversion from string to integer. I need to do a conversion from string to integer. How to do that? So if I'm sure that while entering only I'm going to get number value, then the best practice is just convert string to integer over here only. So while calling, what I will do is I will convert this thing into integer. Integer. INT stands for the short form for integer. Now this will tell me to convert it into integer. Now if I supply some number value, okay, and if now I check type of number, then this time I will get string. Okay, is this thing clear? So if I use input function to accept anything, when user is giving or user is supplying anything from the outside to the program, then the default way of accepting it in the form of string. Okay, and unlike other programming language which you know, so once I created this variable num to store number value, later I can use num to store strings also. Okay, I can use to store strings also. Okay, अभी आगे जाके मुझे इसमें कुछ floating point value store करना है तो मैं floating point value भी store कर सकता हूँ. So same variable can be used to store different types of values. So this type of languages are called type free language. They are not strictly typed. So if you had learned C or Java, so Java and C programming languages are strictly typed language. It means there you have to first define the type of variable, then only you can use it. And once variable is defined as integer, it will only store integer values. But Python is type free, or this is not strictly typed. So once I'm using a variable or container to store any integer value, in the next line only I can use the same integer to store floating point value or a string value. So is this points are clear to you? Any questions or confusion till this point to anyone? Sir, if we try to print num, then what will be the output? Because we are assigning the same variable to both the things, right? So it depends on at what time you are calling. So if you are calling now, the output will be 45.6. If I call this print function before the line num equal to 45.6, the output will be 6. So it depends at what time you are checking. Okay, so print is like it will open the box and check what is inside. So जो भी तुमने currently store किया होगा, that output will be displayed. Okay, sir, got it. Okay. Anything else? Sir, are you going to share this video you're recording? So if The it is class? I will share. Yes. Thank you. क्योंकि सर एक बार 110. में देख के समझना. अच्छा अच्छा ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं शेयर कर दूंगा. अच्छा इससे याद है, I have created one classroom for you because it is difficult for me to manage your class. So I just share that invitation with you. You can join the class. There I will share the experiments which you can perform. Okay.
So these are the basic things. If you understand it, it will be the next practicals will be easier for you. Okay, so we'll come to theoretical part and everything, but these are the very basic things. Since Python is very easy to learn language, very less theoretical background is needed. And if you had already done any programming, then Python will be the most suitable language to understand. Okay, this is very flexible thing and versatile. You can use Python for various things. This is a multi-purpose language. Okay, तो अगर तुम्हारा कुछ IoT से भी रिलेटेड टास्क होगा, कोई मशीन ऑटोमेशन करना होगा, देयर आल्सो यू कैन एम्बेड पाइथन कोड. Okay, वेबसाइट बनाना होगा और एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज पॉसिबल विद पाइथन. ओके, सो क्लासरूम ज्वाइन कर लो. ये लिंक से ज्वाइन हो रहा है सबको. आर यू गेटिंग प्रॉपर परमिशन टू ज्वाइन इट? यूज योर कॉलेज ID. Yes, sir. Okay. So if you go to this classroom, you will find out that I had allocated experiment number 1. Find experiment number 1. Just go and check. I'll show here. And so this is your experiment number 1. Okay, so this is a simple program to understand the input and output operations. You write a program to display your name and your roll number. Okay, you have to use comments. So next we'll try to understand what are comments. Okay, and we see how we can write entire program, because अभी तक जो हमने setting में देखा, जो हम अभी वे use कर रहे हैं, in that at most I can give one instruction maximum. Okay, so one instruction at a time I can supply to this to this console which I am dealing with. Now what if I want to write entire program which composed of multiple instructions? Okay, so for that what we have to do, we have to go to this file section. Okay, here we have to go and create new file. Okay, now this new file is created. Here I can write my entire code. Okay, so this program I am creating to add 2 numbers. Okay, so I'm creating this program to add 2 numbers. So first step is to take input. So I'm having number 1. Okay, first we do a simple program. I'll assign 45 to it. I am having number 2, where I'll assign some 46 point some floating point value. Then what I want is I am creating a new variable called result, where I'm assigning the addition of number 1 plus number 2. Okay, and then in the end I'm printing the value of result. I'm printing the value of result. Okay, simple program. Now what are comments? Let's suppose I'm writing very complex logic over here. Okay, and this logic is so complex, then in future I may also forget. Okay, or I'm using something very meaningful thing over here, which I want that I should remember forever. Okay, or for documentation purpose, I want to write something in this code. Okay, but वो जो भी चीज अब मैं लिखने वाला हूँ वो इंटरप्रेटर के काम की चीज नहीं है. And next what I want, interpreter should ignore it, avoid it. Okay, because this next thing which I am going to write is totally for my use. I don't want this instruction to be given to computer. So for that we can use comment. In Python we will use hashtag to give comment. Hashtag is used to give comment. Here I can write this is my first Python program. Okay, so I want that when my code will compile, when my code will execute, I want this first line to be ignored by the interpreter, and ये जो first line है वो execute नहीं करना है. I want my execution to start from line number 2. Okay, or I just write that this is
to add two numbers, to add two numbers. ओके, तो हैशटैग यूज करोगे तो कमेंट हो जाएगा. Now I can save this file. I'll save this file. I can go to file, click on save as. I'll click on save as. I'll give name of my file. So this is my add program. And once I give name, next the important thing is you have to write dot and give extension py. Py stands for Python. Py is short form for Python. So every Python file will have this extension called .py. Okay, you can save this file anywhere, wherever you want. You can create a new folder and there you go and create. Like I have various folders. So कहीं पे भी जाके तुम इसे store कर सकते हो. Okay, so I can go to any folder. I can create a new folder over here also. I'll give Mac Python code. Okay, I'll hit enter create. And inside this folder, I want to save my file. Okay, I want to save my file. Okay. Now till this, everything is done. Now next is I want to run this code. I want to run this code. Now how to run it? From on your what to say, menu bar. You will find various options, and there is one option called run. Okay. So here I can go for first option called run module. There is a shortcut given. Either I can use F5 to execute my code, or I can click here run module, and my code will run and I'll get the output. And this is the output generated, and it is telling 91.87 is the answer. Okay. To modify the program, what I can do, I can go to my code. I can go to my code. Code कहाँ गया? Open my file from here. Yeah, I don't use this ideally. That's the problem is. कहाँ पे गया था हमने? कोड फोल्डर में Mac Python code बनाया था. And this is my add.py. I can open it. Okay, so this is my code. All right. Now what I want is this. I don't want to keep this two values fixed always. I want to take this value input from user. So for that I call input function. I'll say over here that enter first number. Okay, double quotes close. Okay. Here I'll input and try write enter second number. Enter second number. Okay, and I'll format this also. I'll write result for addition. Addition of num1. Okay, and num2 is equal to result. ठीक है, थोड़ा फॉर्मेट कर दिया डिस्प्ले को. You can use comma operator to combine two different things together. Okay, I'll save my file and run. Save my file, then save, and then run this code, run module. Okay, so I'll start. ठीक है, फिर से रन करता हूँ. I want new terminal to be displayed. So over here, this is asking me for number 1. I'll say the first number is 34, the second number is 54, and the addition of 34 and 54 is 3454. क्या problem हो गया? What's wrong here? What to do? How to fix this? I want addition of 34 plus 54. I don't want concatenation of this. कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा? क्या चेंज करना पड़ेगा? Any advice? Yes, anyone? क्या करना है अभी?
we forgot to convert the numbers from when we are using input command to accept numbers. So by default, number 1 will be of type string. Number 2 will be of type string. So I'm adding string with string. That's why concatenation is happening. So if I want to change them into integer, I can say that num1 now convert it into integer, and also I can convert num2 to, yeah. So either you accept integer value directly and then store, or while taking input only you convert and store in the variable, or later stage also if you want you can convert. Okay. Now in this case what will happen? Even though I'll get my answer, but still the type of num1 and num2 is string. Okay, I'm not permanently converting them. If I want to permanently convert them, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? I will write num1 equal to integer num1. Okay, so this is permanent conversion. I converted into integer and then I stored integer value in the container. The difference over here is I'm only converting, not storing in the container. So container is still having string value in it. Okay, so right now there is no need to convert num1 to integer. Okay, so if I run this code, I'll get the output. I'll save my files over here and then go to run module, asking me for number 1, asking me for number 2. Output is 110. Okay, just to verify मैं सही बात बता रहा हूँ तुमको, or you can go and check the type of num1 and num2 also. So type, I'll check, I'll print over here, print, right, type of num1 is, okay, here I'll check type of num1, type of num1. Okay, मैं क्या कर रहा हूँ? Type of num1 check कर रहा हूँ. Similarly, I can also check for type of num2. तो अभी मैंने क्या बोला कि we had permanently converted only num1, num2 is temporarily converted. उसको हमने permanently storage में store नहीं किया. So if I run this file, save first save this file and then run, it will ask me for numbers. I'll say 56 and 43. And this is telling your num1 is integer, but num2 is still string value. The addition is 99. ठीक है? So if you want to permanently convert, you have to assign it to the container. Any questions here? It's not odd, this is off. Okay, so I guess this part is clear. So till this point, if you understood, then you are good to go with experiment number 1. Okay, so your today's task from now onward is to download Python interpreter, then set up your environment. Let's check your code is running. The sample code ideally is working, and then create this file for experiment number 1, save it, and write a code for the instruction given. So you have to write a program which will display your name and roll number. Okay, so now you continue.